Assalamualaikum viewers and listeners, welcome to yet another live stream of All Understand. आज हम रिव्यू करने लगे हैं जो आज का डबल हेडर हुआ that was first match involved Sri Lanka versus Netherlands. There was a surprise on the cards, but didn't happen. Sri Lanka won their match and got onto the points table finally. दूसरा मैच था, it had all the eyeballs. वानखेड़े पे काफी देर के बाद क्रिकेट वापस आई, वर्ल्ड कप क्रिकेट टू बी वेरी प्रिसाइज. But boy, oh boy, the performance which South Africa put has like sent the shivers down the fans of many cricket fans all around the world. So yeah, आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा. You all can get involved in the chat. Of course, your comments will be featured live on the show. So yeah, I have been joined by wonderful team member from Karachi. So yeah, Hosanna, क्या हाल चाल है? Hope you are doing good. Yeah, I'm good. How are you? Like, आज के matches भी बहुत अच्छे हुए. Yeah, I am doing good as well. और I mean आज की क्रिकेट बहुत fascinating थी. So Hosanna, जरा रिवर्स ऑर्डर में लेके चलते हैं because वो वाला मैच हमारी मेमोरीज में ज्यादा फ्रेश है. Of course, we will be touching down on the first match as well. उसाना वैसे बटलर पे मीम पे बनी हुई है, बट कुछ जरा पहले जरा मैच के सेंस बना लेते हैं. टॉस से स्टार्ट करते हैं. डू यू थिंक अभी बटलर की वैसे स्टेटमेंट आ चुकी है कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, पोटेंशियली शुड हैव बैटेड फर्स्ट. तो आप उनके चेंजेस कैसे देखती हो? ऑफ कोर्स दे वेंट फॉर बॉलिंग डेप्थ और उन्हीं बॉलर्स ने फिर जाके फेंटा के, बट एट द लास्ट टाइम जो लाइनअप हुई मैच पे आते हैं, हाउ वाज योर प्री मैच वाइब जब टॉस हुआ और लाइनअप आपने देखी? Okay, so Ben Stokes made a comeback, but कुछ उसका effect आया नहीं. They और went for a bowling depth, but instead they got hit for 399 runs. I don't know what they were doing. They went for, and there's a trend when Josh Butler loses the toss and chooses to chase, he loses the matches. So I don't think he should win any tosses now forwards. And I don't know what it's happening to England, but they can't chase. They are unable to chase. Like, as they're not defending anything, they are not chasing anything. I don't know why they are here. I could eat my own words later on the tournament, but up till now, they're not here to. They're just here for a good time, not a long time. Let's say that for England. All right. Pretty nice assessment, I would say. अच्छा, मेरे प्लान में ये था कि दोनों टीम्स अभी तक जितने मैचेस हो रहे थे किसी टीम के पास मोमेंटम होता था और दूसरी टीम बस नीचे लगी होती थी, तो पता होता था कि यार वन साइडेड मैच होने लगा, वन साइडेड मैच होने लगा. इसमें ये था कि यार इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार के आ रही है, नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को मारा हुआ, तो दोनों टीम would be up for the fight. तो मुझे लगा था कि यार for the first breaking time in this World Cup कोई क्लोज मैच होने लगा. तो जब मेरी फाइट ये थी, बट आई वाज काइंडा, मुझे यानी डबल एडवोकेट बनते हुए कुछ सेंस बन रही थी कि बॉलिंग चेंजेस क्यों किए गए लाइक इंग्लैंड के स्क्वाड में. बट ओके, बॉल हैवी जाओ लेकिन 6 बॉलर्स आपके पास होना चाहिए. इट लिटरली मेड नो सेंस के सिर्फ प्योर 5 बॉलर्स खिलाओ. ठीक है, रूट फॉर मी इज नॉट अ बॉलर. ठीक है, ऑन एंड ऑफ पे एक आधा दिन उसका अच्छा आ गया, बट नो. और बेन स्टोक्स वैसे ही बॉल करा रहा, तो जो वेंट विद 5 जो वर एट रिस्क. अफ्रीका ने, आई मीन हुसैना, व्हाट इज योर टेक? मुझे तो लगा कि वो टैक्टिकली जरा बबूमा को बिठा दिया था. I that is not a dig on बबूमा, but I'm thinking that is not a disrespect at all. But of course उसी से हाँ उसी से लिंक कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी रिप्लेसमेंट आई is Hendrix, he performed very good. So आप कैसे देखते हो जो like first 20-25 overs के फिर क्लासन की इनिंग्स को क्या लगा टचडाउन के? And Marco Jansen, like, what a innings by him. Henry Klaasen just stole the show, of course, but Hendrix also. अब Bavuma कहाँ बैठेगा इस lineup पे, मुझे समझ नहीं आ रहा. How will Bavuma make a comeback in this lineup?
They have really tough decisions to make. The problems I would like to have, but yeah, I Yeah. would think X-wing innings by Marco Jansen and Henry Klaasen. Yeah, Henry Klaasen, amazing. He also did in the past. I think they were having a series. England and Mhm. South Africa were on the series. Henry Klaasen, the same guy, did the damage against England, if I remember correctly. So yeah, remarkable Yeah. innings by Henry Klaasen. So one for World Cup memory books, one for. Okay, all right. अच्छा, क्विंटन डिकॉक से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट थे, ऑफ कोर्स अभी इस वर्ल्ड कप में सेंचुरीज भी कर चुका है, बट पहली बॉल पे चौका, देन नेक्स्ट बॉल ही गेट्स आउट, ड्रामेटिक स्टार्ट टू द मैच as it is expected with England and South Africa. So I am all pumped कि यार जैसा expected था कि दोनों टीम्स अपने दिखाएंगे. Even then, उसके बाद जब Reza Hendricks comes onto the crease, he takes he takes some balls to settle, and then it is over number सिक्स, या ओवर नंबर सिक्स रीस्टॉपले का ही ओवर था जिसमें उसका लाइक वो इंजरी हुई, और उसमें पहले उसने दो चौके खाए, फिर वहां से मोमेंटम बना एंड कमिंग ऑन टुवर्ड्स रीता हैंड्रिक्स. आपने टच ऑन किया. अभी पिछले मैच में मेरा मानना ये था कि डेविड वार्नर की इनिंग्स याद ज्यादा रखी जाएगी, ठीक है, मिचेल मार्श के Hmm. निस्बत, ठीक है, बट मोर प्लीजिंग टू द आईज, मोर एस्थेटिक शॉट्स किसने खेले, वो मिचेल मार्श के थे, इन माय हम्बल ओपिनियन. Hmm. आज जो रिजा हैंड्रिक्स शॉट्स खेल गया ना, ओए ओए, Hmm. I What mean, shots? cover drive, straight drive, inside out. I mean, inside out, he is one of the best shots, Hmm. like shot creator inside out. वो नासिर हुसैन भी बता रहा था कमेंट्री में कि अभी उसने एक इनसाइड आउट मिस कर दिया, तो वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो हो गया कि यार ये कैसे मिस हो गई. तो Rina Hendricks, I mean, full props to him. Or, yeah, I think so. By Okay. 20 overs, they had scored 130. Yeah, yeah, yeah. क्या कहना चाहेंगे शॉट आप? से याद आया, वुड्स ने जो आके एंड में बैटिंग की है, ही वाज हैविंग सो मच फन. आई वाज एंजॉयिंग हिज बैटिंग सो मच. भले वो डाउन एंड आउट थे, बट द इनिंग्स वुड वाज प्लेइंग, आई थिंक 43 हाँ हाँ, आउट ऑफ उस लाइक पे 80. आते हैं. हाँ, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं. लेट्स हैव लाइक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. नाउ ओके, देन फ्यू विकेट्स फेल, और मुझे ऐसा लगा कि यार जैसे हमारी टीम का होने के सारे स्टार्ट लेते जा रहे हैं, बट नोबडी इज कन्वर्टेड दैट इनटू बिग स्कोर, ठीक है, स्पेशली व्हेन द मिलर गेट्स आउट. और एक इधर इधर एक मेरा टॉकिंग पॉइंट इधर था, एंड दैट इज ऑन डेविड मिलर, ठीक है, ओके. बायलैटरल सीरीज में वो परफॉर्म करेगा, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा उसकी बायलैटरल सीरीज में परफॉर्मेंस ज्यादा आईपीएल में, डोमेस्टिक लीग में, ओके, बट आई मीन वर्ल्ड कप्स, be it 2020 वर्ल्ड कप्स, be it ओडीआई वर्ल्ड कप्स, आई मुझे अभी तक कोई ऐसी लाइक धमाकेदार परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्क्रीन याद नहीं आ रही कि यार दैट इज. एक परफॉर्मेंस मुझे याद आ है, वो भी वो मैच था 2015 का वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ एबी डिविलियर्स ने सेंचुरी मारी, तो उसी मैच में कोई डेविड मिलर ने भी 80 किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू मी he ghosts in the World Cup matches. So yeah, I am living it up to there. But anyway, मैं जो point कहना चाह रहा था कि जब वो wickets drop हुई, like 236 को 5 हो गए थे या 255 को 5 हो गए थे, and there were 14 or 15 overs left. क्लैसन तब तक क्योंकि उसे विकेट उधर फॉल हो रहे थे, तो ही वाज टेकिंग सम टाइम, एंड ऑफ कोर्स वी मस्ट कि इंग्लैंड के इंजरीज होना शुरू हो गई थी. Humidity was killing them, or in a way it was kind of satisfying. So Hussaina, how do you see uh, England kind of making comeback, क्योंकि ये अगेन सिग्निफाई करेगा क्लैसन की इनिंग्स को, जो अभी हमारा सेगमेंट अगला बनेगा. Hmm. Okay, so England can obviously make a comeback, but their net run rate has been damaged so much, losing by 228 runs. If win all their remaining matches, maybe they will have to compete Australia and Pakistan, I think, for the net run rate to get through the fourth semi-final spot. So it's up to England के वो तीन कितने रन से अब हरा रहे, कितने विकेट से हरा रहे. So
नेट रन रेट पे बहुत बात आ जाएगी क्योंकि इतनी बड़े मार्जिन से आ रहे, दे आर लाइक द सेकंड लास्ट on the table right now, so it will be a really hard comeback, but it's England, you can never count them out So, obviously, and the other tournament will have be Hussain, sorry to hard interrupt you. set. I think you lost my question. Let me confirm with you. You can hear me right now, loud and clear. Hmm. Oh, Yes. okay. होता है ना जरा आप बहुत आगे चल रहे हैं मेरे से बट anyway I was kind of building it up towards Heinrich Klaasen innings मैंने Oh, वो phase sorry. yeah I Hmm. was describing that phase जिसमें साउथ अफ्रीका के दो तीन विकेट्स इकट्ठे गिरी और again it is चाहे मुंबई की पिच हो चाहे बंगलोर की पिच हो इट इज वेरी हार्ड कि दो तीन विकेट्स इकट्ठे गिरे मोमेंटम दूसरी टीम के पास चला जाए और वो Hmm. आप एक तो रिगेन करो और जिस तरह क्लैसन है अब आते हैं क्लैसन की इनिंग्स में लास्ट लाइक जो Hmm. ओवर 40 to 50 एक्सेलरेशन हुई स्पेशली there is a stat that 7 overs like over number 41 to 48 उन 7 ओवर में 128 स्कोर हुए ओके आई मीन दैट इज Hmm. माइंड बॉगलिंग उन 8 ओवर्स में 10 चौके 10 छक्के लगाए साउथ अफ्रीकन टीम ने एंड Hmm. आई डोंट वांट टू लाइक पुट द डिस्कशन बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैं अपने जुड़वा भाई से भी बात कर रहा था कि यार इतने तो हम पूरे मैच में इतनी बाउंड्रीज लाइक स्पेशली छक्कों की बात कर रहे हैं हमें पूरा वर्ल्ड कप लग जाएगा 10 छक्के लगाते शुक्र है बट हमारा एनीवे मैच चेन्नई में। होता है ना हाँ अच्छा होता है ना क्लैसन की इनिंग्स में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या लगी हिज परसिस्टेंस कि यार विकेट्स गिरे उसने विकेट थ्रो या हिज एक्सेलरेशन वाला जो फेज था कि वो उसने फिर हर जगह मारा है मार्क वुड को मारा लाइक हर तरह के बॉलर्स को मारा है और अगेन आप कह सकते हो कि इंग्लैंड के बॉलर्स डाउन और आउट हो चुके थे बट अगेन योर बैटर्स हैव टू परफॉर्म so what is your best takeaway from his innings? Okay, so at one point, Henry Klaasen was sweating so much, and he was down and out, and then he just started hitting boundaries all over the place. So that was the best part of the innings for me, basically. So so yes, that was the. Yes, Emma lost his connection. Sorry, Asana, Okay. my Okay. internet got Yes, yes, uh, I was just go saying ahead. that the okay, so I at one point at the time Henry Klaasen थक चुका था, इतनी humidity थी, he was tired, he was sitting on the pitches, और then उसके पास जब उसके पास क्या क्या बोलते स्ट्राइक गई है, he just started hitting boundaries all over the place. Acceleration जो की है हैनरी क्लासन ने, that was like the best part of his innings for me, because he was tired but he didn't give up, like give up तो नहीं करना था, but अगर उससे रन नहीं भागा जाता तो वो जॉग कर रहा है, he was still doing the singles and the doubles, and he was hitting also all over the place, Yeah. he was replying with boundaries, and that was resilience on his part, I would say, कि वो पूरी उसने innings carry की है to put 3999 on board. So yeah, that was really impressive by Henry from me and Marco Jensen. All right. But yeah, and of course, I think so. England ki tactics were not really spot on. They went for pace, pace, pace. Apart from Goose Atkinson, whose figures are reasonably good. Reasonably good, I would say. Hmm. Still, साथ की इकोनॉमी आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत अच्छी बॉलिंग करा दिए बट आई वांटेड टू पुट फ्लावर्स ऑन द नेम ऑफ आदिल रशीद इवन आज के दिन भी उसके फिगर्स रेड आउट एज 10 overs 62 score and two crucial wickets as well. So yeah, I think so. He's one of the best bowlers around. मैं fast और spinner दोनों को combine करके कह रहा हूँ in this day and age. और again, credit to him is as well कि वो illness face कर रहा था उसकी आज की selection भी थोड़ी dubious थी
और थ्रू आउट ह्यूमिडिटी की वजह से भी वो सफर कर रहा था, बट डिस्पाइट ऑल द odds he performed really good. So then they finish on 399. Okay. Uh, Hmm. so at halftime, do you thought that England has a chance, any sort of chance, और आपको लगा था कि साउथ अफ्रीका ने मैच इधर एंड कर दिया होगा? So yeah, what were your half time vibes? Yes, so England has known to have explosive batters. We can't never count England out. They have Joe Root. They have Benjamin Stokes. Like you can't say they have Ben Stokes. So yeah, he's like everybody calls him the messiah of England cricket. Like they were joking around on Twitter because England fans were, but yeah, he is basically the messiah of like Test cricket. He is a famous dude, but in ODI cricket, like Ben Stokes, ODI cricket. So yeah, you can never count England out. But once they were on the pitch, they also have Harry Brook. We also have Johnny Bairstow. They could have put a better put foot foot forward in chasing the target, but England just didn't show up today. Not with the bat, not with the ball, and it was all around disappointing performances from them. That's Mm, yeah, and then I think जो बैटर्स की परफॉर्मेंस थी was kind of दो तीन dismissals थे, जिसमें लगा कि यार they are not here in right mind of frame to play like competitive cricket, hmm, but more so the discussion needs to be forwarded towards South hmm. Africa pace battery, and I think so. Yes. I mean, there are like, uh, I think so in my past time, Spain cylinder का एक combination बना था, and Morne Morkel at that time was eclipsing Hmm. cricket के बात करो. They had some really good core. हम अपने watch time में बात करें, the past grades we can't talk much, but from that moment onward, South Africa on and off एक आधा कोई पेसर आ गया तो आ गया, but now they have Hmm. probably one of the fastest, और हर बॉलर की पेस तो है ही है, ठीक है, इवन जेंसन इवन क्विक से क्लिक्स 149, Hmm. ठीक है, but the angles they create, the like deliveries, the accuracy they have, or I mean full marks to the captaincy of Aiden Markham as well. He was spot on with field placements, full time aggressive captaincy. So, apart from their pace battery, which bowler fantasize you the most? I know Rabada obvious answer हो सकता है, but yeah, Rabada. how would you put flowers to their? Yeah, yeah. Go ahead. Yeah, for me it was Rabada because he was the person who bought up the collapse, if you call it a collapse. So I would say Hmm. Rabada has been impressive in all the matches, and he's consistently performing. And Jensen has also been performing, but Rabada stands out from the pick of their bowlers for me. Yeah. I know it's an obvious answer. Yeah. Okay. Then moving forward, आपका favorite phase आने लगा, that was Wood and Goose Atkinson having some sort of party. I think so उन्हें कुछ they made some sort of recovery to their net run rate, which could have gone like into negative threes, negative. अभी वैसे negative 2.25 को touch कर रहा है, but it could have really gone -3. Uh, I mean, एंड पे जाके अफ्रीका ने कुछ फंबल्स किए फील्ड में, बट वन कैच, आई थिंक इट वाज अ बॉलिंग ऑफ लुंगी एंड केटी. I'm Hmm. I'm forgetting the batter's name, but South African fielders showed their case, and I at that moment मुझे लगा कि यार साउथ अफ्रीका दिस साउथ अफ्रीकन आउटफिट इज काइंड ऑफ कमिंग फुल सर्कल यार, मतलब बैटिंग में उन्होंने परफेक्शन दिखाई, फिर बॉलिंग में परफेक्शन दिखाई, फिर फील्डिंग में भी वो लाइक दे आर गोइंग फॉर द किल एंड किल at times which we lack under Hmm. especially big matches. So, Hosana, we have to digress towards the second match, but
जहाँ पे फाइनल थॉट ऑन साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, डू यू थिंक, मतलब एक तरह कंपैरेटिव सवाल पूछ रहा हूँ, इंडिया तो ना वो लाइक दे आर प्लेइंग ऑन ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेनेट, ठीक है? Hmm. साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैचअप में, ठीक है, विच टीम स्केयर्स यू द मोस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड? तो या The way New Zealand is playing scares me, but I also know we have always defeated New Zealand. आपके How, साउथ however अफ्रीका good. को भी मारना होगा ना? However, we have. मुझे अभी डर न्यूजीलैंड से भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दिस कुड बी देयर ईयर, बट हाउ नो मैटर, जितने भी साल हम जितनी भी क्रिकेट खेले, जितनी बकवास खेले, हम न्यूजीलैंड की टीम जितनी भी अच्छी हो, हम उसको हरा के आ जाते हैं. देयर इज वी हैव समथिंग. बट अब साउथ अफ्रीका का ये है कि अभी वो लोग अभी हार के आया नेदरलैंड से. And Netherlands हाँ, could be their demon. जो भी कहते हैं, every team has their own demons. We have India, like we haven't defeated India, so we could say that South Africa भी हरा सकती है हमें, न्यूजीलैंड भी हरा सकती है, बट डिपेंड्स ऑन द टीम कि वो कैसा खेल रही है. अब हमें पता नहीं है ना कौन सी पाकिस्तानी टीम आगे क्रिकेट खेलेगी. They could have आके, we don't या know. fair assessment, I would say. And people, we are about to segue into the first match. But before that, I would request all of you to participate in our poll that reads the simple question, that is Klaasen the best finisher in world cricket right now? Let me put forward you some stats. In 2023, ODIs के stats बता रहा हूँ, 752 runs, averaging 55 and strike rate of 148. I was talking to my twin brother again कि यार ये एबी डिविलियर्स वाले नंबर हैं, ठीक है? और आज की इनिंग्स भी प्रॉपर एबीडी वाली प्रोवाइड से कि यार 360 जा रहा है, तो जा shout out to all time favorite cricketer, that is AB de Villiers. So yeah, Saran, I think so. It is the time that we shift towards the first match. It was Sri Lanka versus Netherlands. Netherlands. So Saran, we will keep the segments very short. Hmm. Pre-match आपके predictions क्या थे कि श्रीलंका जीतेगी या न्यूजीलैंड? Very shortly. Okay, I obviously Sri Lanka, but Netherlands played excellent cricket as well. Can't say anything. They played very very good. But yeah, Okay, okay. I was So, on Sri yeah, Lanka. yeah, yeah, yeah. Sticking at that very moment, I really thought कि Netherlands श्रीलंका को ले जाएगी, यानी मैच हरा जाएगी. Uh, Hmm. and at that moment, there is a comment from Dr. Ritvik. Let's have him on the feature. Let me put on him on the screen. And his comment reads as hello, hello Dr. Ritvik, hope you are doing good. And further on, he says, tomorrow, how will Bold perform? Okay, we will come to that point very shortly. I think so. For me, Dr. Ritvik, अभी आपके question को answer कर देता हूँ. For me, if any matchup is going to decide the tomorrow's match for, that is going to be Bolt versus not Bolt versus Kohli. That is going to be Bolt versus Sharma. ठीक है? शर्मा की Yes. वीकनेसेस सबको पता है, बोर्ड की स्ट्रेंथ सबको पता है, बॉल कमिंग इन. बट आई थिंक सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बोल्ट आउटसाइड पे लाइक आउटसाइड पे से आउट करने लगा है. आई डू थिंक बोल्ट शर्मा को लेके जाएगा, बट ओवरऑल इंडिया विल पुट ऑन रियली गुड नंबर वर्सेस न्यूजीलैंड. सो आई होप आई हैव डन जस्टिस. सो होता है ना, श्रीलंका पे आते हैं डॉक्टर ऋत्विक के क्वेश्चन पे. आपको क्या वाइब्स आ रहे हैं? बोर्ड विल परफॉर्म गुड या इंडियन के बैटरी से आउट परफॉर्म करने लगे शॉर्टली क्या? Okay, the first 5 overs are really important. If Rohit Sharma out हो गया because he's vulnerable in the start, left arm pacer bolt उसकी wicket ले सकता है. It depends on how Rohit Sharma will preserve his wicket. So depends on the first 5 overs. अगर Bolt wicket ले गया तो Bolt will perform good. अगर नहीं लिया तो it will be Rohit Sharma's day, which has been happening the whole tournament. That's see. Yeah. And And meanwhile, people, while you're watching us, please make sure to hit the like button because that is the best possible way to spread the content on YouTube. Algorithm इसी तरह वर्क करते हैं कि जितने ज़्यादा likes होंगे उतने ज़्यादा content spread होता है.
And please make sure to hit the subscribe button if you are new to our channel. We are daily putting on content, not only related to Pakistan, but related to all matches. कल हम इंडिया के मैच पे भी डिस्कस करेंगे एंड देयर इज अ लिटिल अनाउंसमेंट we will have special guests all the way from India to review their game. So do stay do tune into our channel tomorrow as well. But now coming towards the match of Sri Lanka versus Netherlands, आपको लगा था कि नीदरलैंड के पास चांस है. मुझे लगा था कि नीदरलैंड एक्चुअली मैच लेके जाएंगे. For me it was 60-40. But anyway, coming on towards Sri Lanka, again, हमारा एक शो था. We were joined by Esther Vasidevan from Sri Lanka, Sri Lanka के podcast से. I asked him, I asked her about the possible inclusion of Kashin Rajitha in place of Lahiru Kumara. उन्होंने ये कहा था कि यार, he is a really good opening spell bowler. And the credit were due to Sri Lankan management. उन्होंने ऊपर से ही उन्हें पता था कि ये as Estelle mentioned in the show कि वो मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में बहुत वीक बॉलर है. कासुम रचेता को ऊपर से 7 ओवर देते लाइक ऑन द ट्रैक. मुझे एक तो कासुम रचेता को मैं इधर अप्रिशिएट करना चाहूंगा बिकॉज इन दिस मॉडर्न डे एंड एज हर तरह की क्रिकेट चल के फिटनेस ह्यूमिडिटी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ 7 ओवर इकट्ठे कराना चाहे नीदरलैंड के खिलाफ करा दो. दैट इज नेवर एन इजी चांस. ठीक है, लाइक नेवर एन इजी टास्क. तो उस स्पेल में ही टुक 3 बिग विकेट्स लाइक वो नीदरलैंड्स के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करके रख देता है. So coming on towards ये मैंने श्रीलंका के इनिशियल पैच को कवर किया. आई थिंक सो द फिगर रेड एज 56 for 5, then 102 for 6 at one point, and over number 26 or 27 that was. हुसैना at that point आप पिछला मैच देख चुके थे साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड्स के खिलाफ. एक तरह से सिमिलर पैटर्न था. How do you see the back-to-back recoveries of Netherlands cricket? पिछले मैच में स्कॉट एडवर्ड्स था, इसमें एंगल बैक और लोगन मैन बेक ने किया. So yeah, over to you. Okay, so they lost 6 wickets on top. I think they were 87 for 6 out. Then they had a Yeah. recovery. Yeah, I'm not sure. Like, one second. Yeah, they were Yeah. out and they had a recovery for about 100 run, 130 run partnership. So yes, Netherlands does this thing like they're really impressive. They do not give up, whatever the situation is, and that's why they are playing the World Cup, of course. But yes, it was like the highest partnership, like highest partnership for any wicket for them. So yes, really impressed by the Netherlands batting, of course. And I was like, they could easily give a chase to like Sri Lanka. It was a really tricky chase. Like, अगर Netherlands आती है तो they could easily defeat them. If they defeat South Africa तो वो श्रीलंका को हरा ही सकती है. So जैसे एक point पे लग रहा था कि वो recover कर गए और वो ले जाएंगे मैच. But yeah, credit to the Sri Lankan batters as well कि वो chase कर गए. Yes. Yeah. Now coming towards Sri Lanka, of course, we have our resource person Kesha as well. I talked to her on the half time mark. She was confident कि अब जहाँ से recovery करके आए तो we have a good chance to make a real match out of that. And I had a same feeling कि again जो मेरी प्री मैच थी कि 60-40 टोटल को देखते हुए भी मेरा ये था कि 60-40 in favor of Netherlands. Now coming on towards the second innings, overall a cautiously positive start from Sri Lanka, Patum Nishanka especially, but Aryan Dutt, किसी ने prediction की थी मैच से पहले के top wicket taker होने लगे मैच के. He takes 2 wicket up top, wonderful bowling. एक कुशाल पेरेरा को पहले आउट किया, कुशाल मेंडिस को आउट किया. एक गेम चेंजिंग मूवमेंट मुझे याद आया. कुछ पार्टनरशिप लगी थी थर्ड आउट पे एंड वो थी सादेरा की. ठीक है, सादेरा की पार्टनरशिप लगी थी बट उन्हीं का कैच भी ड्रॉप होता. दैट अगेन वाज बॉलिंग ऑफ आर्यन दत्त.
बट उसी कैच ड्रॉप के अगले ओवर में वैन मिक्रा ने तीसरा आउट किया and the scoreline at that moment read as 67 for 3 probably. And I really thought कुछ टेम्पलेट पढ़ने लगा कि फिर 100 तक 5 आउट हो जाएंगे जैसे साउथ अफ्रीका के हुए थे तो मुझे था कि नीदरलैंड्स आर इन फॉर द गेम बट नाउ देन सदीरा ने हमारे खिलाफ एशिया कप में भी स्कोर किया था उससे पहले उन्होंने एक मैच स्कोर किया था एशिया कप में he showed class there he showed grit there he showed composure there और वही सारी चीजें आज उन्होंने कॉपी पेस्ट की नीदरलैंड्स में although apart from आर्यन दत्त आज किसी बॉलर ने उतना ट्रबल नहीं किया आज उनके लिए कंडीशंस उतनी कंड्यूसिव नहीं थी क्योंकि उनके जो आप कह लो लोगन वेनबीक फास्ट बॉलर है या वैन मिक्रन फास्ट बॉलर है बट दे आर नॉट एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स धर्मशाला की जो पिच थी वो लाइक इस तरह के बॉलर का सूट करते हैं ब्रीजी होती है और लाइक जब आपके पास पेस नहीं है तो ब्रीज आपको चाहिए कि एक एक्स्ट्रा हार्डवे मूवमेंट हो वैन मिक्रन ने पिछले मैच में 2 आउट किए थे लोकन वेनबीक ने पिछले मैच में 3 आउट किए थे टुडे दे कुड नॉट पेनिट्रेट क्योंकि कंडीशन उन्हें उस तरह की नहीं मिली बट फुल पास टू सदीरा सेंचुरी तो नहीं हुई बट एट द वेरी एंड ही स्कोर्ड 96 बिग रन्स और फाइनली श्रीलंका गॉट अप टू द पॉइंट्स टेबल सो आई थिंक सो इट इज फेयर टू से स्टिल कि श्रीलंका मैच जीत के या नीदरलैंड्स मैच आ गई इट इज प्रेटी फेयर टू से कि ये दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस है तो आई थिंक सो आउट ही आउट है और यू थिंक कि श्रीलंका 5 मैच जीत सकती है depends on Sri Lanka, but I don't think the contender. They're not a semi-final contender, but they are playing good cricket. Like Netherlands and Sri Lanka have played good cricket, I would say. So yes, and yeah there's Sri Lanka as well. He played a really good inning. Yeah, I forgot his name. I forgot. So nice of you to mention him out. So yeah, I think so. We have pretty much covered both the matches. कल इंशाल्लाह अपना मैच प्रीव्यू करेंगे and as I mentioned, we will be reviewing India game on the same show as well. We will have guests from India as well. So anyone of you watching us right now, या आप हमारी स्ट्रीम कुछ देर बाद या अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक देखेंगे प्लीज डू चेक आउट फॉर आवर नोटिफिकेशंस ऑन ट्विटर प्लीज सपोर्ट अस हियर प्लीज सपोर्ट अस ऑन आवर ट्विटर so yeah, on that note myself Ahmed along with Hussain are saying goodbye to all of you viewers Jitna Samat and Allah Hafiz.